In the last video, we have seen what is JavaScript, and in this video, we see Browser and Node.js. Okay, let's start with the browser. ब्राउज़र एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करता है यूजर को वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन में. ओके, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ब्राउज़र इज क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ब्रेव एंड क्रोम यूज V8 इंजन. आई नो हमने अब तक इंजन नहीं पढ़ा है बट देखते हैं. ओके, लेट्स सी द Node.js. Node.js is basically a runtime environment जो कि हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को रन करने में आउटसाइड द ब्राउज़र. इट also uses V8 engine. सो हमने देखा अभी क्रोम भी V8 इंजन यूज कर रहा है, Node.js भी V8 इंजन यूज कर रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सो डिफरेंस दोनों में आता है इनकी कैपेबिलिटीज और एपीआईज को लेके. ओके, लेट्स सी द कैपेबिलिटीज ऑफ ब्राउज़र. ब्राउज़र HTML और CSS को प्रोसेस करके वेब पेज को रेंडर करता है, वेब जावास्क्रिप्ट को रन करता है, यूजर इवेंट को हैंडल करता है, डाटा फेच करता है सर्वर से, एंड यूजर इंटरेक्शन में हेल्प करता है. ओके, लेट्स सी द कैपेबिलिटीज ऑफ Node.js. सो Node.js बेसिकली हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन करने में. हम Node.js की हेल्प से अपने सर्वर को क्रिएट और रन भी कर सकते हैं. वी कैन also access file system using Node.js APIs, and we can also handle network request and make a connection. We can also manage database through libraries like Mongoose, handle streams and large amount of data efficiently. Now let's see the APIs of browser and Node.js. So browser have document, window, local storage, cookies, fetch, DOM APIs, timer. And Node.js have file system, HTTP, process, buffer, streams, timers, env control. So that's all for this video. In the next video, we will see what is JS engine basically.